All right, so this is the fourth day of Python series. Let's go. So we have currently done string indexing, and conditional statements, logical statements. Further, now we have to discuss a basic program quite for yesterday, and after that we have, what do we have? Yeah, so we were done with format specifiers. Now we have while, for, and nested loops. So in this session, I'll be continuing with while loops. Yeah, so let's go. Dash right here. Yeah, you can use negative indexes too. Let's talk about X's. Maybe we're hiding somebody's credit card number except the last 4 digits. Hey everybody, in this topic I'm going to explain format specifiers. Format type. जाट people काफी जगह है यार, तुम कहीं भी देख लो एक भी ऑप्शन दिख जाएगा। Alright, so partner फेमस है भाई। से मेरा नाम है सात्विक। लेट्स से मेरे नाम में है स्ट्रिंग्स 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 डेसिमल लगा लो। 1 2 3 1 2 3 राइट। तो रिजल्ट लिखेंगे और रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। हाँ, लोगों ने ये भी हॉस्टल का टूर बना रखा है। बनाओ भाई, अच्छा हॉस्टल। यार अच्छा एवी का और क्लैन ब्रिज दो ही का तो टूर बनता है। दो ही का तो नाम है, लड़कियों के लिए क्लैन ब्रिज और हमारा बॉयज के लिए एवी। रिजल्ट में ले लो तुम। हाँ, प्रिंट करा रिजल्ट। डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करो, प्रिंट ही करा दो। तो प्रिंट करो, स्ट्रिंग लो, then price of name अभी की वीडियो डाली हुई है। और name is तो name प्राइसिंग रख लो नेम की, और यहाँ पे आएगा नेम। अब नेम के बाद जितने इंडेक्स लगेंगे इसके बाद लगेंगे, तो लेट्स से केवल 2 ही डेसिमल पॉइंट्स को फ्लोट करवाना है, तो 2 यहाँ से आ जाएगा। यार कहाँ जा रही टू ये तुम्हें ये दो घंटे मुझे आती है ना ये। इसके पहले मुझे राइट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, नहीं पड़ता ना प्यार करना। 10 डिजिट से राइट अलाइन करना है, तो दिमाग में तो सब होते हैं। 10 डिजिट से राइट अलाइन हो गया। लेफ्ट अलाइन करना है 2, 5 फ्लोट दिखाने हैं, तो ठीक है। तो सर कितने पे करना है? 50 से कर लो, तो 50 नहीं हो रहा। गंदा फील हो रहा है क्या हो? मेडिसिन ले ली? सिट्राजिन खाई थी ना अभी? अभी भी दर्द हो रहा है? तो कौन आ सकता है?
अल्लाह को परेशान नहीं करा, किसी और को परेशान करता हूँ। अरे तो सिट्राजिन से कुछ नहीं होता, वो 2 पड़ी की दवाई है। कोई वो नहीं है तुम्हारे यहाँ लोगो जो आती है विक्स वाली टॉफी आती है जो गला साफ हो जाता है। सेंटर लाएगा और अगर उसके आगे विक्स है लगाने के लिए, प्लस डिस्प्ले करेगा तो आप सेंटर कर लो। अलाइन है तो गले पे लगाओ, सही हो जाता है, मान तो जाओ। सेंटर अलाइन हो नहीं रहा, पता नहीं बस गम्मी नहीं लगेगी। But yeah, those are just a few format specifiers in Python. Hey everybody, in this topic I'm going to explain while loops. A while loop will execute some code while some condition remains true. Here's an example. We'll use an if statement first. We will ask a user for their name. Name equals input. Enter your name. If our name is equal to an empty string, that means the user didn't type in anything. Let's print a message. You did not enter your name. Else, we will print, using an F string, hello, our user's name. If I were to skip this prompt, we would execute this if statement, then we continue with the rest of the program. What if I would like to continually prompt the user to type in their name? We can't continue until they type in something. Well, we could replace this if statement with a while loop. While this condition is true, continue to execute this code. Within the while loop, I'm going to reprompt the user to type in a name. Then if we were to exit the while loop, then we will print hello, whatever your name is. So let's run this. Enter your name. I'm going to hit enter. You did not enter your this to not enter your name. Else, we will print, using an F string, hello, our user's name. If I were to skip this prompt, we would execute this if statement, then we continue with the rest of the program. What if I would like to continually prompt the user to type in their name? We can't continue until they type in something. Well, we could replace this if statement with a while loop. While this condition is true, continue to execute this code. Within the while loop, I'm going to reprompt the user to type in a name. Then if we were to exit the while loop, then we will print hello, whatever your name is. So let's run this. Enter your name. I'm going to hit enter. You did not enter your name. Enter your name. No, no, no. Okay, I give up. I'll type in my first name, hit enter. Hello, whatever your first name is. While this condition remains true, execute this code potentially forever until this condition is no longer true. So that's one of the main benefits of a while loop. If it's not true, then you exit out of the while loop. And that's why we're able to continue, then print our name. Hello, name. You do want some way to escape out of the while loop, otherwise you'll run into what's known as an infinite loop. So let's say while name is equal to an empty string, we will print, you did not enter your name. So I'm going to hit enter. So we are stuck in an infinite loop. We can't actually escape this loop. We didn't give ourselves an exit strategy. That's why previously we reprompted the user to type in something. We're giving them a chance to escape. In a way, it kind of works like an if statement, but instead of executing some code once, it's potentially infinite. Here's another example. This time, let's ask for a user's age. Age equals, and I will convert the input to an integer. Enter your age. We'll need the user to type in a positive number. While age is less than 0, let's print a message to let the user know that they can't do that. Age can't be negative. Then we need some strategy to escape. Let's reprompt the user to enter in their age. Once they type in something that's valid,
we can escape out of the while loop. So let's print, using an F string, you are age years old. So enter your age. I'm going to say -1. Age can't be negative. -2. -1 million. Okay, I give up. How about 21? You are 21 years old. So that was another example. While our age variable is less than 0, repeat this code forever. Let's go over example 3. I'm going to introduce some logical operators. We will have the user type in a food they like. Food equals input, enter a food you like. But in order to escape, they need to press Q to quit. While food is equal to the letter Q, continue this while loop. However, I'm going to make one change. We want to exit the while loop when they press Q. So you could say while not food equals Q. So within this while loop, let's print the food that they stated that they like. I'll use an F string. You like your variable food. Then we will prompt the user to enter in another food that they like. Enter another food you like, Q to quit. Then once we escape the while loop, we will print just buy. Okay, enter a food you like, Q to quit. I like pizza. You like pizza. I like sushi. You like sushi. I like ramen. You like ramen. Okay, this program's kind of lame, so I'm going to press Q to quit, and we escape the while loop. We have printed buy. So you could do something while something is not true by using the not logical operator. All right, last example, example 4. We will use the or logical operator. We'll ask a user to type in a number between 1 and 10. Let For example, All right. I wanna do something with you. तो जो करूँगा वो doing है और जो बोल रहा हूँ वो नहीं भी क्या हाँ मुझे ये सब भी बताना है बुक नाउन होगी noun is basically subject and verb is the action right so जैसे कि this is the good book अरे book तो noun है ना तो इसमें if condition में name equals to हैं? क्या हो रहा है ऐसे जैसे कुछ हो रहा है भैया रुको देखो this is a good book basically means this का होगा बाबू 3 बजे सो जाऊंगा आज ठीक आज से करियर रास्ते पे वरना करियर सही में रास्ते पर क्या बोलते हो बढ़िया इसको स्केप करने के लिए while कि जब तक name सात्विक नहीं होगा वो पॉकेट तुम्हारी उसकी है नहीं किसी और की उसके बाद कुछ बातें बताई नहीं जाती ये प्रिंट होगा और फिर तुम्हें इनपुट देना पड़ेगा else वाह यार मैंने
Hmm. फोटो बताओ चुपचाप बैठ जाओ चुपचाप Hmm. बकवास करने के लिए देखिए कंपटीशन बहुत सारे हैं तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरी तो क्या है मुझे लगता है कुछ लोगों को दिमाग में कीड़े नहीं होते कैसा अरे यार, समझ ही नहीं आ रहा बताओ तो ये कोई काम करो तो पूरी तरह से बंद कर दो वो पढ़ाई करो अब तो प्यारे प्यारे घर होते हैं मिलते हैं Hmm. Hmm. Press Q to quit. अगर आपको तुम्हारी सर्जरी होनी चाहिए हमारे जाके सर्जरी किया जाएगा पूछा You are. अनुष्का यार कोई डाउट अनुष्का कोई डाउट पूछ ले भाई पहले तो मैं तुझे गुस्सा खाया उसको करो जाओ जॉइंग तो है जॉइंग जॉइंग मैं लोग कोई काम को गुस्सा अभी भेजो अभी अरे यार. वहाँ से लिट्टू को निकलेंगे नहीं निकलेंगे उसको Hmm. Back.
समझ नहीं आ रहा अगर मन में जा रही है तो साउथ इंडियन एक्सेंट क्यों रख रही है? वाह यार इस क्लास का रेंट है 2 दिन का 1 साल फ्रंट ऑफ एफिल टावर 15 फ्लोर अरे एफिल टावर से नहीं क्यों अब तो शुक्ला भी हंस गया तो सुन के एक बार तो नहीं सुन रहा है वो काम कर रहा है उतनी देर से देख रहा है कुछ ट्यून सी बज रही है अभी तो मैं रूम में अकेला था एकदम से आया वो काम करने लग गया सारा तो कुछ नहीं हो रहा शुक्ला ने मेरे से ये फोन कर रहा हूँ मरने जा रही है साउथ दिल्ली एक साइड लेकर भाई आज 5 रुपए की मोमो दी दो भाया भाया 20 के मोमो 20 के मोमो भाया एक भाया भाया 20 के मोमो 20 नॉट 20 it's 20 मैं भैया बोलता हूँ भाया मैं भैया बोलता हूँ मेरा निकल जाता है करके कहते हैं मेरा नॉर्मल सच में अब लग रहा है कि सच में गुटखा खाया है सच में बता रहा हूँ एक्सेंट में बोलोगे ना वो धक्का देगा मत करो Rescue the good should while अरे यार food बोलता हूँ कि अभी अभी लगा रहा मम्मी को the फोन cube बोलता हूँ कि तेरी रहेगा दीदी ये तो मम्मी जाओ ये इंसान का मुंह टेढ़ा हो जाए बोलने में अरे भाई क्या बोले शायद क्या तो प्रिंट करता हूँ मुझे कभी डर नहीं मिला बस क्या नेचुरली जो तो कर रही है ना नहीं चढ़ जाएगी बेटा तुम्हें तुमने पी कितनी है ये बहुत है अरे ये सब बोलते हैं सुनो नहीं कोई अच्छी एक्टिंग है तुम्हारी वो तुम्हें लग रहा है ऐसा ये सब बोलते हैं ये हम भी बोलते हैं जब हमें चढ़ गए होते हैं हम तब भी बोलते हैं कि मुझे तो चढ़ी नहीं है चढ़ती नहीं है भाई पी कितनी है बिल चढ़ेगी सिरप की तरह नहीं पी लेते ना ज्यादा विंडोज में पी भी नहीं पी बता रहा हूँ पूछा रहने दे मुझे क्या तू ना चुपचाप हो जा और काम पढ़ाई कर ले
कोई जरूरत नहीं है देखिए दूसरा मॉडल करो या या हो गया ना मना क्या दिक्कत है? मना कर रहा हूँ ना तो फूड मैं नहीं खाऊंगा अगर क्यू डालते रहोगे तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। नॉट फूड मत कर नॉट डाल into button बच्चा वाला काम होता है food is queue. कुछ लगे ना मतलब वो 5-6 बार बोलना है मुझे नहीं आ रहा You are age less than food is equal to. However, I'm going to make one change. Could say you like enter in another food that they like. Enter another food you like. Q to quit. Then once we escape the while loop, गाना गा रहे थे गाने के लिरिक्स भी होंगे सबसे बड़ी और एक और मैं बाजू मैं तो मैंने गावी we will print just by. Common, and we escape the while loop. It's not true by using the not logical operator. All right, last example, example 4. We will use the or logical operator. We'll ask a user to type in a number between 1 and 10. Let's say दिलवाऊं तुम्हें बीपी अभी num equal between cast the input as an integer while our number is less than 1 or our number is greater than 10. Let's reprompt the user.
Let's escape the while loop, then we will print our number. Variable. 0 is not valid. -1. 100. Hmm. Nope. Logical operators to while. Execute this code. Some code user input uses that. Why, hello everybody. In today's video, we'll be creating a compound interest calculator in Python. For those that don't know, interest is a charge for the privilege of borrowing money to some individual or organization. When you place money in a bank account, you typically accrue interest. We'll create a program to tell you what your new balance will be after accruing interest for so many years. But the user is going to decide the initial principal, that's the investment, the rate of interest, and the time in years that this balance has been accruing interest. So let's begin. Let's declare 3 variables: a principal, a rate, that is rate of interest, and time. Time will be in years. We've recently learned about while loops. I would like to include those within this program, just so we get the hang of using them. We will ask the user to type in an initial principal investment. We will continue to prompt the user to type in a principal that's above 0. Our condition will be while principal is less than or equal to 0. We will take our principal, assign it some user input, enter the principal amount. Then we would like to typecast our input as a floating point number. If our user input principal is less than or equal to 0, we need to inform the user. Principal can't be less than or equal to 0. So I'm going to test my program by printing the principal at the end, just temporarily. Enter the principal amount. I can't type a negative number and continue. What if my investment was -$1,000? Principal can't be less than or equal to 0. How about 0? Nope, can't do that either. Is 1,000 okay? Yep, 1,000 works. That is for the principal. Let's copy this while loop, paste it, replace principal with rate. This is the rate of interest. Enter the interest rate. Interest rate can't be less than or equal to 0. Then let's copy this again, paste it, change rate to time. Hmm.
ग्राउंड जीरो पे मैं देख सकता हूँ जमीन लगा The river rate to compound. What the fuck is why? नशे के लिए तो दिमाग पे लगना है नशे के लिए तो दिमाग पे लगना है क्या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो कुछ बोलता ही नहीं उनको कुछ बताया नहीं है दोस्तों 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 ये काम है ये पार्टी के ये दुबई वाले हैं ना वो तो बाहर बहुत ज़्यादा बुरे बैठे हैं बढ़िया लग रही है बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है सच बताऊँ तो अगर तुम्हें पैक रखने पड़ रहे हैं बूट्स पर वो द फक दैट ड्रेस मीन्स हमें स्कर्ट अच्छी है स्कर्ट इज रियली क्यूट बट वो बंदी पैड लगा रही है बूट्स पे तुम्हारे इतना है तो हाइट भी मत करो क्या कर सकते हो वो डार्क मत करो तो फिर इसका सेंस क्या है उसके ऊपर ही वाह वाह एक काम करो सुन सुन हाँ पता है मुझे पता है मुझे एक काम करना इसका ना एक फोल्डर बनाओ उसमें सेव करती रहो और डेली दिखाया जाए मैं पहनते हैं मैं आपको बताऊंगा तो चल रहा है ठीक है वार्डरोब में काम करा करते थे कंपनी वार्डरोब में काम करा करते थे फिलहाल हमारी कंपनी को चुकी है बाकी हमारी कंपनी लगता है अच्छी तरह शब्दों को बहुत अच्छी पकड़ है हमारी और आप पर भी बस वो बात लगी डांट नहीं पाता मैं इसलिए मुझे कुछ नहीं
What's better in private? Nothing. And that's regular thing. कंटेंट क्रिएशन के नाम पे कुछ भी चुतिया बना देते हैं लोग क्या है बॉन्डेज चल रहा है क्या बकचोदी है seriously look at the dress. There is some kind of bondage happening. Everything to do with see that girl in at the end. Literally वो weird लगी है वो तो सही पता है. Hmm. Nothing wrong with it. Let's typecast our input as an integer because we're working with whole years. Enter the time in years. Time can't be less than or equal to 0. I'm going to print my principal. We know it be percent be -1. Know that let our printer after like decimal the principal will be my new b5 this program. While principal is less than 0, if principal is less than 0, principal can't be less than 0. Let's time can't be less than equals at the top. So the reason that this is happening is that when we reach the while loops, this condition is false from the beginning. We never end up entering these while loops. We skip over them because these three conditions are all false. We can write a different variation of this while loop where we could say while true. True is a Boolean. That means this while loop will continue forever unless we explicitly break out of the while loop. We're going to add an else clause. Else, we will break. Break will break out of a loop. With our second while loop, change rate is less than 0 to while true. Then we will add an else clause. Else, break out of the loop. While true. Else, break out of the loop. We should be able to enter 0 values in now. Enter the principal amount, 0, 0, 0. Balance after 0 years is $0. This should work the same as before, but we should be allowed to enter in 0 values. $1,000, interest rate of 0. After 1 year, be an loop with or explicitly break out of the while loop using this break keyword, which we'll cover again in for loops. But yeah, that. Hey everybody, in this topic, I need to explain for loops. If So अपने एग्जाम को तो पूरा हुआ ना स्कूल जाओ थोड़ी देर बाद उठ जाना थोड़ी देर सो जाओ फिर थोड़ी देर बाद उठा दूंगा थोड़ी देर नहीं करते ना थोड़ी देर लैपटॉप चार्ज कर दो
तो लेबर फ्री तब तो आएगी, कोई बात नहीं आएगी तो आई क्लोज कर दो। मेरी तो सुननी नहीं, मैं तो ये बोलूँगा। Alright, so I guess this is it for today. I won't be going further much into things. कितना बचा है अभी? काफ़ी बचा है। 4 5 खत्म हो गया। 17 चौथा दिन है 17। तो ऑलराइट, कल मैं करूँगा फॉर से ज़्यादा बड़ा है नहीं, कल करेंगे फॉर लूप्स। तो रिवीजन कर लो। क्या क्या कर लिया? इफ एल्स एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स टर्नरी हो गया, स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स डाल दो। फिर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, और आज वाइल लूप हो गया। वाइल लूप इसका छोटा भाई, बड़ा भाई, जब तक कुछ स्टेटमेंट होना है तब तक वाइल चलता रहेगा। तो बस इतना ही है। कल फॉर लूप्स पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, एज वाला किया, 1 से 10 नंबर किया, फेवरेट फूड क्यू टू क्विट, और योर नेम क्यू टू क्विट। 4 प्रोग्राम्स, 5 प्रोग्राम्स आज कर लिए। सो दैट इज इट एंड आई सी यू टुमारो।